one of the biggest landmarks in terms of our endeavors to strengthen the infrastructure systems in school education will shortly be dedicated to the nation under the aegis of the Shala Asmita Yojana. Today I'm also joined by Secretary of School Education, Shri Kuntia, and the Secretary of Higher Education, Shri Vinayshil Oberoi. And before I highlight the forthcoming plans of the ministry, I would like to pause and reflect on the steps which have been undertaken firstly in the school sector to enhance quality of education. We rolled out a project called Pade Bharat, Bade Bharat, understanding that learning outcomes were a challenge in the school sector and predominantly in government schools. Through Pade Bharat, Bade Bharat, we allocated funds of over 500 crores so that early reading, writing and numeracy can be strengthened for students in classes 1 and 2. This year we are hoping to expand it and take it up to class 3 as well. हमारी शिक्षा प्रणाली में कई वर्षों से छात्रों का शैक्षिक असेसमेंट 3 वर्ष में एक बार होता था। इस सरकार के अंतर्गत हमने निर्णय किया कि इस अकादमिक वर्ष से छात्रों का असेसमेंट वार्षिक किया जाएगा ताकि छात्र को शिक्षा की दृष्टि से अपने आउटपुट को, आउटकम को इंक्रीज करने में, बढ़ाने में, अपनी योग्यता को बेहतर करने में अगर कोई योगदान चाहिए शिक्षकों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, तो वो समर्थन, वो बैकिंग उस छात्र को हम दे पाएं। मुझे कहते हुए हर्ष है कि जिन जिन राज्यों ने पढ़े भारत, बड़े भारत में भारत सरकार के साथ काम किया, उन राज्यों से अब प्रमाण सहित हमारे पास डेटा आ रहा है कि अर्ली रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी के इन सभी कामों में न सिर्फ शिक्षक ज्यादा रुचि ले रहे हैं बल्कि छात्रों का फाउंडेशनल बेस शिक्षा में भी बेहतर हो रहा है। हमारे पास ये जानकारी थी कि कक्षा 6 से 8 में जो हमारे छात्र सम्मिलित हैं, विशेषतः सरकारी स्कूलों में, उनका साइंस और गणित के प्रति रुझान कम होता जा रहा है। To ensure that there is an incremental inclination towards science and mathematics, we undertook a project called the Rashtriya Avishkar Abhiyan, wherein we appeal to institutions of higher learning to adopt schools and undertake training of teachers so that students can be better taught the concepts of maths and science. States that engaged with the Government of India under the Rashtriya Avishkar Abhiyan received 25 lakh rupees per district so that additional aids as teaching methodology, learning methodologies can be provided to the school within the realm of the district that adopted and became a part of the Rashtriya Avishkar Abhiyan. There was yet another attempt made by us to ensure that learning is not confined to only textbooks or the classroom, that a child understands the cultural impact of the society that he or she lives in, and that is why we engage children across all government schools in a program called Kala Utsav. मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि पिछले साल ही कला उत्सव का ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर संपन्न हुआ। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार सरकारी स्कूल के बच्चे अपनी प्रादेशिक कला, नृत्य, संगीत, हैंडीक्राफ्ट्स के आधार पर एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता कर अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे और 5 लाख तक का इनाम वो अपने लिए, अपने स्कूलों के लिए ले गए। इस साल फिर नवंबर के माह में कला उत्सव अपेक्षित है और मैं आशावादी हूं कि इस साल भी बहुत ही जोश के साथ हमारे छात्र इसमें अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, इससे जुड़ेंगे। After the RTE Act 2009 came into existence, one of the big challenges that academicians in the school system faced
and administrators was the challenge of bringing out-of-school children back into school because there was no administrative bridge provided for the same. And that is why, recognizing that in our country, currently there are 60 lakh children out of school, we in the MHRD have reached out to every state and now are in a position to provide a bridge school course so that those children who are out of school, through an exemplar model which is given to the states through NCERT, can now help bring out-of-school children back into the mainstream school system, an effort which we see was administratively disabled after the RTE came into force. I would also like to here highlight that many state governments expressed their concern to the Government of India that there are many standalone schools where not many sufficient amount of teaching was done, and they were of the opinion that there should be consolidation of small schools so that a larger infrastructure can be provided to children who otherwise went into classrooms with no teachers. We at the MHRD are reaching out to every state so that a matrix of regulations can allow states to consolidate schools so that children get better facilities under one roof. Children who otherwise would move from one school to another will be given transportation facilities. Given that in the last year's budget, there are many states who have been helped to consolidate the school systems in their respective states, and the success of such an engagement, we will now allow states across the country to carefully undertake this kind of a inclusive exercise in conjunction with district authorities, school management committees, and looking at the fact that they need to track the migration of every child from one school to another. Coming to Shala Asmita Yojana, for many years in our country, data with regards to school education was available in blocks. Never before was data available for the individual student, individual teacher, individual government school, for the Government of India in conjunction with states to undertake an exercise to enhance quality of education. I am pleased to share with you that in conjunction with all the states, the Government of India plans to now dedicate to the nation in the coming next 1 month the Shala Asmita Yojana, which will become the world's largest student tracking mechanism, wherein we will have the capacity to have a daily track of attendance of students going to government schools, attendance of teachers, attendance of even the non-academic staff that goes to the school, which will help us intervene in terms of learning outcomes that needs to be enhanced. This will be done in conjunction with state governments, where the Government of India becomes a facilitator in terms of what is the pathway that needs to be undertaken to upgrade schools that are lacking not only in quality education, but also lacking in terms of infrastructural needs. This kind of a mammoth exercise is a first of its kind which will be taken in the school education sector. I am also pleased to share with you that currently close to 16 states are undertaking a student-related child tracking mechanism which has helped them rationalize not only enrollment, help them also highlight the attendance matrix in their institution, and also engage with teachers more productively. The database for the entire country will be available for analysis by the Government of India because of this initiative completely by March 2017. I am hopeful that the surge of quality in the school sphere can be addressed through this engagement wherein we seek to leverage technology. Before I move on to higher education,
let me also express my deep gratitude to all the states who have ensured that they give us their fullest cooperation in the Swachh Vidyalaya initiative. राष्ट्र के इतिहास में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से ये राष्ट्र के समक्ष निवेदन प्रस्तुत किया कि क्या ये संभव है कि 1 साल के अंतराल में हम हर सरकारी स्कूल में लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था करें। अपने आप में ये चुनौती बहुत बड़ी थी, लक्ष्य समय सीमा के अंतर्गत ही हमें प्राप्त करना था। इसलिए मैं आभार व्यक्त करती हूं सभी राज्य की सरकारों के प्रति, सभी ऑफिसर्स के प्रति कि पहली बार राष्ट्र ने देखा कि कैसे 4,17,000 से ज्यादा स्कूली टॉयलेट्स भारत सरकार और प्रदेश की सरकारों के समन्वय के माध्यम से हम बनाने में सक्षम रहे, हम बनाने में सफल रहे। ये भी यहां कहना उचित होगा कि पहली बार हमने देखा कि मात्र कागज पर स्ट्रक्चर को खड़ा करने से हमने संतोष नहीं किया। हमारी ओर से भारत सरकार के 300 से ज्यादा अफसर राष्ट्र के हर जिले में गए ताकि वो स्वयं निरीक्षण कर इस बात की पुष्टि कर सके कि वाकई में वो टॉयलेट, वो सुविधा वहां पर दिलवाई गई छात्रों को या नहीं। सो फॉर दिस इनिशिएटिव to meet historical success, I reiterate my gratitude to all the officers, the state governments that were party to the success of the Swachh Vidyalaya campaign. Moving on to the higher education sector, I would like to here firstly highlight that we in the Government of India were aware that there were pendency with regards to regulation for the triple ITs, the Indian Institute of Information Technology, a bill that was long pending and passed in the year 2014 and notified in the first month of 2015. I am also pleased to share with you that the School of Planning and Architecture bill, which also was pending since 2013, disabilitating the degree-giving capacity of these institutions, was passed under the leadership of this very government in both houses of parliament. I would like to here state that under this government, in the past 2 years, we have opened 6 new IITs, 1 NIT, 5 triple ITs, 6 IIMs, 2 IITs, 1 NIT, 5 triple ITs, and 1 ISA. I am hoping that the emergence of these new institutions across the states will also add to quality education in the higher education sector. I would like to here compliment not only the Secretary of Higher Education but also our regulators who have for the first time rolled out the National Institution Ranking Framework. We had made a promise to the nation and particularly our students when we had launched this initiative on the 29th of September 2015 that we will give a ranking framework to the country in the first week of April, and keeping that timeline, the first ranking separately for the fields of engineering, management, pharmaceuticals, architecture was dedicated along with universities on the 4th of April 2016. I would like here to add that over 3,500 institutions across the country joined us in this exercise, making it the most and the highest participated ranking exercise in the entire world. I would also like to share that from the next academic year onwards, ranking will be now additionally be available for medical and law institutes as well. I would like to here express my gratitude to the IIT Council that accepted the Government of India's suggestion that fees be waived off for our students who are from the SC/ST community, students who are differently abled, and students whose annual income is less than 1 lakh rupees. Additionally, students whose family annual income is less than 5 lakh rupees
have a waiver now of 2/3 of their fee, a first of its kind under this government. To enhance increased participation and engagement of students through the regulator with education institution, the Know Your College portal was dedicated to the country in November 2014 so that students can make informed decisions as to which organizations or institutions do they seek admission in. आज मुझे कहते हुए हर्ष है कि नो योर कॉलेज पोर्टल पे वर्तमान समय में देश की लगभग 50,000 इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं उनकी पूरी डिटेल्स के साथ, ताकि जो भी छात्र एडमिशन लेने से पहले अपनी इंस्टीट्यूशन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता हो, they can avail of this information at the click of a button. I would like to here state that to leverage technology and enhance our engagement with the student, for the first time, all NCERT books were made available free of cost from classes 1 to 12 in English, Hindi, and Urdu. Additional books available through the system of CBSE were also made free, available on the ePathshala and eCBSE portal and web and mobile app. I would now like to add that in the higher education sector, in the forthcoming next 1.5 months, by the end of next month, close to 1,000 course materials for undergraduate and postgraduate courses will be available free of cost for our students in the higher education sector. Understanding that our nation is a nation of diverse languages, celebrated diverse cultures, we have dedicated on the 25th of last month the Bharatvani portal, wherein free information in various Indian languages is available to all citizens. I would like to add that in the first year, our Bharatvani portal has higher education material in over 22 languages, which will be scaled up to 100 languages in the forthcoming 1 year. Also, we have 130 glossaries of various languages and terminologies. The mobile app currently has information in 35 Indian languages and dictionaries, which will be scaled up to 250 languages in the next 1 year. The importance of this language engagement is this, that in the higher education sector, our students are challenged by the language barrier, and thus we believe that this engagement will also help them bring about a better interface with their faculty members or other fellow students. I would here also speak about the fact that there has been an impetus given to skill, wherein on one side we have through the AICT appealed that every engineering or management institution that wants to utilize their infrastructure to doubly provide for skill training can do so if that training program has an established national occupational benchmark without coming to the regulator for any kind of permission. I would also like to say that an impetus similarly is being given under the UGC, under the Kaushal Vikas Kendra, so that there is an amalgamation of effort between academia and our skilling programs. I would like to say here that in terms of internationalization of curriculum and an increased and enhanced engagement with international academia, for the first time in the history of our country, the government of India has facilitated over 500 foreign academicians to come and teach in Indian government state institutions or central institutions at no extra cost to any student or faculty member. I am happy to share that in this year, exponentially this figure is to rise to at least 1,000 such teachers. I would also like to say that apart from our initiative of Gyan, this morning as I expanded on our engagement of states for the RUSA program, I have confirmed to all states that we have celebrated academicians from very established and celebrated institutions internationally who have now committed themselves to help upgrade our curriculum
especially in the state sector of higher education. I can confirm that academicians from UC Berkeley, University of Pennsylvania, Georgia Tech, University of Washington, MIT, Yale, Cambridge, University of Edinburgh have given us their confirmation that they will help upgrade the curriculum systems in our state universities and colleges if the state governments so desire. We will also look forward to their active engagement, including an engagement between AICT and the Stanford University, which I think will be extremely beneficial for many engineering students across the country. Given that we have a plethora of announcements, given that we have a plethora of progressive work that has been done in the past 2 years, I would now, before I take questions, only say that the 2 years that we have spent in this department have been spent in identifying those gaps which have gone unnoticed for a very, very long time. Education sector was being serviced in silos. There were many announcements made, but in terms of implementation, we found many schemes lacking on the ground. It has been the effort of officers of both Department of Higher Education and School Education to ensure that, as it's said in English, that God lies in the details, that it is that detail, it is that God that we pursue. My grateful thanks to all states and all citizens of the country who have reposed their faith in us, and my assurance to them that we will continue to deliver on the promise of quality education. I would also like to share that we have made an e-book of our journey of the past 2 years, which will be available for public view on our MHRD website and our Twitter handle, and I'm sure through today's press conference. Thank you. Thank you, Honorable Minister, for your comprehensive briefing. Now, friends, we will take some questions. I will try to accommodate as many as possible. There are placards kept in front of you. Please raise them so that I can call out. We will start with number 23. Check audio. कुंदन न्यूज़ 24 से मैम, एजुकेशन पॉलिसीज़ की ड्राफ्ट अभी लास्ट वीक जमा की गई थी आपके मंत्रालय में, क्या है उसके बारे में? टीआरएस का कई जगह बयान भी आया था कि वो चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में डाला जाए जिससे देश जान सके कि क्या है वो। कुंदन जी, मैं आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि राष्ट्र के इतिहास में पहली बार ये हुआ कि पॉलिसी बनाने से पहले आम नागरिक से पूछा गया कि वो किस प्रकार की पॉलिसी चाहते हैं। जब हमने ये प्रयास किया तो हमें ये कहा गया था कि इतने विशाल देश में ये संभव नहीं होगा। हमने टेक्नोलॉजी को लेवरेज करते हुए हर राज्य के साथ बैठक की और आज लिखित रूप में हमारे पास लगभग 1,10,000 से ज़्यादा गांवों से एजुकेशन पॉलिसी से उनकी क्या अपेक्षा है ये उपलब्ध हुई। 5,000 ब्लॉक से लगभग हमारे पास जानकारी उपलब्ध हुई। करीबन 13 से 1400 अर्बन लोकल बॉडीज़ ने अपना वक्तव्य हमें दिलाया। 20 राज्यों ने लिखकर अपना वक्तव्य हमें भेजा। उसके बाद हमने एक कमेटी का गठन किया ताकि ये कमेटी उन सब विषयों को पढ़े, अथवा अगर उन्हें कुछ और एडिशनली कहना है तो वो अपनी बात को हम तक पहुंचाएं। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब हमने ये पूरी यात्रा शुरू की तब हमने राज्य की सरकारों से ये विशेष वादा किया था कि कुछ भी पब्लिक डोमेन में डालने से पहले हम उनकी राय को उन रिकमेंडेशंस पर प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो ये सत्य है कि 27 तारीख को कुछ रिकमेंडेशंस हमारे पास आए। चूंकि अभी भी राज्य सरकार को अपना मत व्यक्त करना बाकी है, इसलिए एक आधी अधूरी चीज को राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत कर मुझे लगता है अब तक के 2 साल के इस पूरे काम को सबसे बड़ा मुझे लगता है अन्याय होगा अगर हम राज्यों के साथ जिस समन्वय से अब तक काम कर रहे हैं उस समन्वय के सेतु को तोड़ दे मात्र एक हेडलाइन के लिए। Ma'am, Mr. T.S.R. Subramaniam has said that if ministry is not going to publish that report, then he is going to do so. Has he written a letter to you about the same? I will only say this, that this education policy will not become an attempt to be a legacy of one individual who seeks a headline. My request is that this is the property of 110,000 villages, over 5,000 blocks, over 500 districts,
over 20 states that have given it to us with the confidence that any recommendation that comes to us will be first shared with them before it is made a draft policy. So I will only say that it's unfortunate that misleading or distasteful headlines are done, but I'm only of the opinion that I will not renege on my promise to state governments that they will have a voice in it before I dedicate it to the nation. स्मृति जी, दो प्रश्न हैं. एक स्कूल का राइट टू एजुकेशन का स्टेटस, दूसरे जो देश भर में पूरे ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज चल रहे हैं स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में, उसका स्टेटस क्या है आज के? दो आपने प्रश्न किए स्कूली शिक्षा से संबंधित. मैंने जैसे कि कहा, राइट टू एजुकेशन एक्ट की घोषणा अपने आप में हेडलाइन बहुत बनी, लेकिन जब हमने वर्तमान में उसकी स्थिति देखी 2 साल पहले इस मंत्रालय में आकर, तो 2 प्रमुख बातों पर आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करती हूं कि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन थे उनको दोबारा स्कूल में लाने का जो प्रावधान था वो अपने आप में डिसेबिलिटेट हो गया था, क्योंकि अब किसी भी प्रशासन के पास प्रशासनिक ढांचा इस एजुकेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट के बाद बचा नहीं था कि वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को वापस स्कूलों में ला सकें. इसीलिए हाल ही में हमने एक मैट्रिक्स बनाया है जो प्रदेश की सरकारों के साथ शेयर करके एक मॉड्यूल हम लोग एनसीईआरटी के माध्यम से बनाकर प्रदेश की सरकारों से कहेंगे कि आप अपने प्रदेश की दरकार के हिसाब से आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को दोबारा स्कूलों में लेकर आएं. दूसरा, एक बहुत विख्यात जो एक संशोधन अक्सर बातों में आता है कि बच्चों को 25% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन मिलेगा. पिछली सरकार ने इसकी घोषणा की, लेकिन इसके पीछे कोई आर्थिक प्रावधान नहीं किया. इसका मतलब ये मात्र घोषणा तक सीमित रह गई. हमारी सरकार के आते ही हमने राज्य की सरकारों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि जब तक इसके पीछे आर्थिक सहायता ना प्रदान की जाए तब तक ये मात्र पेपरी एक बयान रह जाएगा. हमने आर्थिक प्रावधान दिया. करीबन 18 लाख बच्चे हैं देश भर में, अगर मेरी जानकारी सही है तो इट्स सब्जेक्ट टू करेक्शन, जिनके संबंध में राज्य की सरकारों ने हमें जानकारी दी कि उनको हमने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भर्ती किया है और हमने फिर राज्यों को भुगतान किया ताकि ये महज एक कागजी अनाउंसमेंट ना बने बल्कि धरातल पर ये एक हकीकत बन जाए. ब्लैकलिस्टेड यूनिवर्सिटी की आपने चर्चा की. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 21 ब्लैकलिस्टेड यूनिवर्सिटीज की जानकारी हमें दी, अपने वेबसाइट पर दी और पब्लिक नोटिस में भी लेकर आए. साथ ही हमारे उच्च शिक्षा सचिव ने स्वयं सभी शिक्षा सचिवों को लिखकर और बात करके भी ये सूचना दी कि चूंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है, इसलिए स्टेट के अंतर्गत इन लिस्टेड ब्लैक लिस्टेड जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो कानूनी और उनको बंद किया जाए. दूसरा, मैं ये भी कहना चाहती हूं, एक ऐसे संस्थान था जिसके खिलाफ यूजीसी को ऑर्डर हुआ कानूनी कि वो एफआईआर दर्ज करें, वो एफआईआर दर्ज हो चुकी है. मैम, मैं मुकेश हूं दैनिक जागरण से. आपने राज्यों से दोबारा संपर्क करने की बात कही, लेकिन इस दौरान ये जो ड्राफ्ट बन रहा था उस दौरान आपकी भी बैठक हुई और ड्राफ्टिंग कमेटी ने भी जोन वाइज राज्यों से बातचीत की थी. तो क्या आपको लगता है इसके बाद भी ड्राफ्ट को डालने से पहले राज्यों से बात करने की जरूरत है? मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी पॉलिसी मात्र एक व्यक्ति को महान या महिमा मंडित करने की पॉलिसी नहीं है. ये अधिकार राज्य की सरकारों का है और उनके अधिकारों का हनन करना लोकतंत्र में बहुत बड़ा अपराध होगा. मैम, एक जेनेरिक सवाल है कि आप भी कह रहे हैं कि सब चीज पहली बार हो रहा है, हर मंत्री ही बोल रहे हैं कि सब चीज पहली बार हो रहा है. But in 60s, के साथ तो बाकी no, what I'm saying, ma'am, if you listen to me. Can you identify yourself, sir? I'm Deepak Das from Times of India. Yes. In the 67 years, we also had a BJP government. And you know, when you came to power, you also highlighted the achievement of the old government. Yes. So do you think, or even all other ministers think, that nothing happened in those 7 years also? I think that Sarva Shiksha Abhiyan, I'll give you an example, Mr. Das, that was started under the aegis of the first NDA government, is something that we are improving upon, like with projects like Pade Bharat, Bade Bharat, which are a sub now part of the Sarva Shiksha Abhiyan that was started under the leadership of the previous NDA government. Hence, to say that the NDA government, when in power at the center, did not initiate these exercises would do a great injustice to our leadership. Let's take an example of the highways that are being built.
The fact that for the first time the nation could even dream about the fact that infrastructure would get such a central assistance and push from the center in engagement with states is a legacy of the previous NDA government, which is now being strengthened under the leadership of the Prime Minister and an able minister like Shri Nitin Gadkari. So there are many initiatives that have been undertaken for the first time with regards to learning outcomes enhancement, with regards to increasing of quality education, or giving an added thrust to research and scientific input and output. But let it also be said that this is not only a continuum of the good leadership and governance provided under the leadership of Shri Atal Bihari Vajpayee, but it's also a new example being set under the leadership of the Honorable Prime Minister. यस मैं सुदर्शन न्यूज चैनल से हूं, कृष्ण कुमार दुबे। मैं आपका ध्यान नकल जो योजना देश भर में चलती है, आप केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार नकल को रोकने का बड़ा प्रयास करती है, लेकिन पिछले 2-3 दिन पहले हमने जो देखा बिहार में जिस प्रकार से ये पूरे सिस्टम को कोलैप्स करके जिस प्रकार से रिजल्ट्स घोषित हुए, जिस प्रकार से बच्चों ने बाजी मारी, इसको किस प्रकार से निपटा जाएगा? क्योंकि इतने हाईटेक सिस्टम होने के बावजूद भी इस नकल योजना पे विराम नहीं लग रहा है। मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि कहीं ना कहीं आपने अपने इस प्रश्न में इस बात का भी संकेत दिया कि शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी और मर्यादा के अंतर्गत आता है। ये सत्य है कि एक चुनौती राज्य की सरकारें इस वक्त उससे जूझ रही हैं, लेकिन इस चुनौती का इजाफा इस बात से भी हुआ कि नो डिटेंशन पॉलिसी को लाया गया, जिसकी वजह से लर्निंग आउटकम्स को हमने गिरते हुए देखा। बहुत सारा साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एविडेंस प्रस्तुत हो चुका है, जिसके अंतर्गत इनफैक्ट बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वयं एक लिखित रिपोर्ट में कह गए कि पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई नो डिटेंशन पॉलिसी जो है उसका खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगत रही हैं, और आज शायद इसी का एक प्रमाण आपको बिहार के इस केस में भी दिखा। तो हमारी कोशिश है कि शाला अस्मिता योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लर्निंग आउटकम्स की दृष्टि से बच्चे को एग्जाम की उस धरातल पर पहुंचने से पहले ही उसकी पूरी यात्रा में रेमेडियल मदद से हम उसको सशक्त इतना करें उसके कॉन्सेप्ट में कि जब वो लिखने बैठे अपना एग्जाम तो कहीं ना कहीं उसकी कॉम्पिटेंसी उसमें दिखाई दे। हमारे राष्ट्र की एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम रोट लर्निंग पर ज्यादा तवज्जो देते हैं और कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन हमारे देश में कम होती है। क्रिटिकल थिंकिंग हमारे बच्चों का स्कूल एजुकेशन में कम दिखाई पड़ता था, जिसकी वजह से आप ये सारी घटनाओं को देख रहे हैं। इस साल जो हमारा नेशनल असेसमेंट सर्वे होगा उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड हम लोग टेस्ट करने का प्रयास करेंगे छात्रों का, ताकि अगर कॉम्पिटेंसी को उनका जज करें तो पता चलेगा कि एक सब्जेक्ट को कितना वो समझ पा रहे हैं। और मेरी आशा है कि केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर फिर इसको हम मेनिस तो मानते ही हैं सोशली, लेकिन अगर एकेडमिकली देखा जाए तो इसका मतलब ये बच्चे ये छात्र इस बात का संकेत दे रहे हैं कि उन्हें अपनी शिक्षा की वृद्धि में आउटकम की वृद्धि में सहायता की जरूरत है। महाकवि कालिदास ने कलिंग के राजा को लॉर्ड ऑफ द सी महोदधीपति कहा था। कालिदास ने यहां का वर्णन ऐसा कहा। और कलिंग का प्राचीन बंदरगाह ये हमारा बालेश्वर शहर हुआ करता।